under the boughs where the shadows play. The wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm, the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. तो अभी रॉयल फील्ड के सर्विस सेंटर पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में बाइक की सर्विस स्टार्ट होगी। ये रॉयल एनफील्ड के 650 न्यू मॉडल लॉन्च किया है इन्होंने। The wind hums songs at the break of day. Whispering pines, अप्रॉक्सीमेटली secrets untold, 4 के करीब है ये। carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet ये स्टैंडर्ड का मॉडल है 650। इस साइड इनकी हिमालयन patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to काफ़ी अच्छी
सस्पेंशन वगैरह काफ़ी अच्छी है इसकी। कुछ चल के करवाते हैं सर्विस। अभी टेस्ट ड्राइव लेने चलेंगे। अभी इन्होंने ऑयल डाल दिया है इसका। कुछ कर रहे हैं। कौन सा पार्ट है उस्ताद जी? ये ऑयल फिल्टर का लगाने का काम चल रहा है अभी। यहाँ पे लगेगा ये भी ऑयल फिल्टर, ये एयर फिल्टर डाल रहे हैं। Opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm, the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves. Stories that linger on the breath of the breeze. तो नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट डे आपका स्वागत है। आज आपको दिखा रहे हैं सुखना लेक चंडीगढ़। तो कल सर्विस करवाने के बाद रात को व्लॉग एंड नहीं किया, तो आज नेक्स्ट डे इसको कंटिन्यू करते हैं। Carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the काफ़ी गर्मी है, dark. वेदर काफ़ी गर्म है, Pattern अच्छी सी धूप खिली हुई है। within its mark. और The roots बट सुखना लेक की एक खासियत है जहाँ की, जो इसको काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाती है, वो है इसकी ग्रीनरी। to the open लॉट्स ऑफ ट्रीज, प्लांट्स। whispering pines. Sing me your tune. It enhances beauty। Caught in the rhythm, the stars संडे के कारण आज यहाँ पर काफ़ी रश है। teach me the language of rustling leaves. Stories that linger on the breath of the breeze.
यहाँ पे एक सुखना लेक में एक फ़ोटो गैलरी है। आइए दिखाता हूँ आपको। ठीक ठाक लेवल है पानी का इसमें अभी। गर्मी के कारण पानी अभी इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये सुखना लेक की हेरिटेज की फ़ोटोज़ हैं। कैसे सुखना लेक बनी, कब इसका उद्घाटन हुआ। The foundation of Chandigarh have offered this lake and dam to the citizens of the new city so that they may escape the humdrum of city life and enjoy the beauty of nature in peace and silence. To see the stars in the sky and the stars in the mountains too, in the water and all in absolute silence. काफ़ी अच्छी कोट्स लिखी हुई हैं। वो आगे काफ़ी ज़्यादा और दूर तक डिस्टेंस है, लेकिन हम यहीं से वापस चल रहे हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और ये देखो कितना अच्छा हट सा बना हुआ है। अगर कैमरा में अच्छी से ध्यान से देखें तो पीछे एक लाइट सी माउंटेन की रेंज दिखेगी आपको। ये सारी शिवालिक रेंज है। यहाँ से कसौली बिल्कुल नज़दीक है और चंडीगढ़ के बिल्कुल पास पड़ जाता है। और इवन के कसौली से भी चंडीगढ़ की लेक बिल्कुल साफ क्लियर दिखती है इन क्लियर वेदर। तो ये सारी शिवालिक रेंज है।